define this. We have been given the electrode potential. आपको इसको reducing power में standard electrode potential क्या होता है? Reduction potential ही होता है ना? So you have been given the reduction potential. You can see from these values. K plus is going to K. So this is the reduction, right? We have been given the reduction potential values. You have to arrange the metals in the or increasing order reducing power. Last class के note देखिए, you have the relationship. वो भी आपको नहीं चाहिए तो मुझे हम देख लेते हैं. Reducing power. It is reducing power. It is inversely proportional to standard reduction potential. These are the standard reduction potential. इसको आप क्या कीजिए? Practical and reducing power. Carrying them in the reducing power. I hope you have attempted the question. Raise your hand. Don't know how to do the question. Raise your hand if you don't know how to do the question. सबको आ रहा कैसे करना? ठीक है ठीक है तो ठीक है. Sir, we should send you the answer. You can send the answer on my WhatsApp. If you want to send on the chat, you can send on the chat also. I would, however, prefer WhatsApp because I want to see how you have done the question. Yes, very. What happened? Send your voice. Am I audible, guys? Amna, Sarah, am I audible? What Yes, happened? sir. Mariam Batul, I cannot hear you. और क्या आंसर बताइए? किसी का आंसर नहीं आ रहा और Satyam, I can't hear you. Sir, now can you hear me? Yes. Can you hear me now? Yes, sir. It was actually not clear before. Okay. But
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन वो सबसे कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा after that I have I have chromium, after that and after that is the Sir, your voice is not clear. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Standard reduction potential we have arranged. Then we are going in reducing power. Reducing power. ठीक है। Reducing power क्या है? Standard reduction potential SRP के it is inversely proportional. Inversely proportional that means whatever the order is in the उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। जिसका SRP ज्यादा उसका reducing power कम, इसको उल्टा कर दीजिए बस। AG then FB then CR after that MC after that, ठीक है। After this down, raise your hand once you're done. Waiting for Mariam Batul and Batul. Waiting for Mariam Batul, Mariam Batul. Raise your hand, Mariam Batul, Mariam Batul. क्या कर रहे थे जैसे भाई आपको? I hope you understood the question at least. Mariam Batul, what happened? नहीं हुआ अभी तक। Screenshot ले लीजिए। I will wait 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. ध्यान दीजिए जरा। चलिए, किसको ज्यादा समझना माइक ऑन कीजिए। Who wants to understand more? जो माइक ऑन करेगा उसको ज्यादा समझ में आएगा। Who wants to understand more? माइक ऑन कीजिए प्लीज। ठीक है, चूज वन। कोई एक एलिमेंट यहाँ पे चूज कीजिए। मरियम बतूल चूज कीजिए। मरियम बतूल चूज करो। Sir, magnesium. Mg2 plus say Mg. That is equal to minus 2.37.
और पे चूज करो दूसरा कोई आदमी। सारा है मैं कौन किया, सारा पे चूज कीजिए कुछ। चूज वन। सारा 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 एक चूज कीजिए, जल्दी चूज कीजिए सारा। Yes, sir. चूज एनी वन ऑफ दीज मेटल्स। Potassium. पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम पॉजिटिव टू पोटेशियम। I want to make a I want to make a 10 electrochemical cell using these two metals, है ना, -2.9 volts. So both of these values, that is -2.37 and -2.93, both of these are what? Both of these are the reduction potential, है ना। Standard electrode potential तो दिया है, and standard electrode potential क्या होता है? Standard reduction potential ही को standard electrode potential कहा जाता है, ठीक है, according to the IUPAC convention. तो यहाँ पे standard reduction potential किसका ज्यादा है? Which is having higher value, complete value देखा है नेगेटिव चार्ज के साथ, whose reduction potential is higher, Mg या पोटेशियम? Potassium. पोटेशियम तो ज्यादा है, Mg का ना ज्यादा है नेगेटिव। विच इज ग्रेटर, माइनस ये ज्यादा बड़ा है या ये ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा बड़ा है? Okay, sorry, magnesium. मैग्नीशियम है ना। सर आपकी आवाज दोबारा वैसी हो गई। सबके लिए वैसे ही हो गई है। सारा आमना, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. क्या कैसी आवाज, ठीक है? हाँ यार बताइए जरा, आवाज ठीक है? Yes, Yes, sir, sir. सही है। मेरी मतलब आप तरफ से कुछ और करिए। Yes, sir, ठीक है। सही है। Since okay, since Mg2 plus to Mg has higher value of SRP, standard reduction potential किसका ज्यादा है? Mg2 plus से करवाता है, therefore act as cathode, देखो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है वो क्या होना चाहता है? वो रिड्यूस होना चाहता है। So whenever I am going to make a electrochemical cell, then one of the element will be getting reduced, the other will be getting oxidized. Which one will get reduced? The one which is having higher SRP. This is the point that we do in this process. The electrode potential of reduction half greater the reduction potential, greater will be tendency to get reduced, है ना। So when we have a cell between magnesium and तो कौन reduce होगा? जिसका reduction potential ज्यादा है, जिसका reduction potential ज्यादा है, तो Mg will get reduced. Therefore, potassium will be oxidized and act as load. एक आपका अगर reduce हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? Oxidize होगा तो एनोड पे उठेगा। So now you write down A, B, C. एनोड पे कौन है? A. And A पे क्या होगा? C. आपको दिया हुआ वैल्यू किसका? K positive to K. You have been given the value of K positive to K. But oxidation will take place. That's why I will give K to K positive oxidation bridge. And then for Mg, I will write reduction, that is Mg2 positive to Mg. पहले इसको समझ लीजिए, does this make sense? या दोनों पे चलेंगे? Understood. Yes. अब ध्यान से देखिए जरा, how much electricity, how much voltage of when there happens, A to positive, A से K होगा कितना वोल्ट मिलेगा बताइए? A to positive बताओ बताओ बताओ, K to K positive कितना वोल्ट? For this reaction, if I want to go from K to K positive, how much voltage of I think जल्दी मरी मधु K to K positive, K to K positive क्या आंसर? मरी मधु कोई आंसर नहीं, मरी मधु आंसर नहीं करेगी। आंसर K positive, K to positive potential, हाँ, how many volts? सर आपकी वॉइस ठीक है, ये सारा सफा रही है। Sir, the voice is not clear. Voices? It's not clear.
can't understand anything. You can't understand my voice or the concept. नहीं क्या नहीं समझ रहा है. We can't understand the question you're saying. Like, it's not Question audible enough. audible. It's audible. Let me see. Voice let me know. Hello. Sir, I can't understand anything. Maybe my internet is weak, but I can't understand anything. Voice. Yes, sir. How about now? अभी कैसी है आवाज? It's better. एक सेकंड. Sarah, how's it now? It is better than before. Spatial audio voices will sound like they are coming from the person of each person on the screen. Use separate audio device to play the ringtone. Uh, just one more. Spatial audio voices will sound like they are coming from the position of each person on the screen. Use separate audio devices. Since Mg2 plus has higher value of SRP, therefore it will act as cathode, therefore K will be oxidized and act as anode. ये कितने लोग को समझ में आया? Whatever I said it deliberately. I have said it very fast so that अगर हम speed भी बोले तो आप लोग समझ में आए. How many of you understood this? Whatever I said? Understood ना? It's better now. ठीक है. मरियम तुमको सुनाई दे दिया यानी कि तब तो ठीक ही आवाज है. Fine. ठीक है. चलिए. I'm asking. ठीक है. ध्यान दीजिए. K to K positive. देखिए.
K2 K positive is minus 2.93. K2 K positive is how much? K2 K positive is how much? Tell me guys. K2 K plus to K. Sorry, my bad. K plus to K. What is the value? Minus Once 2.93. again. Once again. K plus to K is equal to K plus to K is equal to Minus 2.9. एक बार और बस, ठीक है, लास्ट बार. K plus to K it is equal to Minus minus 2.93. 2.93. इसका उल्टा करेंगे तो क्या कितनी वैल्यू हो जाएगी? If I want to go Positive from 2.93. वेरी गुड, आपसे खुद से आंसर आ गया ना, ये चीज हम पूछ रहे थे, पॉजिटिव 2.93. ठीक है, so with this is going to give me this much voltage. How much voltage will be given by mg2 plus to mg? mg2 plus to mg से कितना वोल्टेज मिलेगा? mg2 plus to mg will give us how much voltage? देखिए बताइए. minus 2.37. minus 2.37 minus 2.37. ओवरऑल कितना मिल जाएगा बताइए जरा. ओवरऑल वोल्टेज दैट आई विल गेट विल बी इक्वल टू हाउ मच? ओवरऑल वोल्टेज कितना मिल जाएगा बताइए. यहाँ से इतना मिल रहा है, ठीक है, और इस वाले सेल से इतना मिल रहा है. दिस एनोड हाफ सेल है, गेट हाफ सेल से इतना मिल रहा है, दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा बताइए लॉजिकली. ये आपको इतना दे रहा है, ये आपसे इतना ले रहा है ना, प्लस माइनस पैसे की तरह समझिए. ये आपको 2.93 रुपीज दे रहा है ना, एंड कैथोड इज टेकिंग फ्रॉम यू 2.37 रुपीज. हाउ मच विल बी रिमेनिंग? आपको कितना मिलेगा? अरे करो करो करो. 0.556. 0.56 पक्का? Yeah. जीरो 0.56 volts, correct. ठीक है, so this is the E naught of cell. This is the E naught of cell. So this much energy, or that is the standard electrode potential of the whole complete cell reaction. पूरे cell reaction को कितना मिलेगा? इतना मिलेगा. This is E naught of cell. अब देखिए बहुत सारे बच्चों ने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहां से आता होगा आपके पास E naught, है ना, ऐसे नहीं आता होगा. So let us see what we have done right now, है ना, वो फॉर्मूला ही कहाँ से आया. ठीक है, let us understand that now. This was very logical. ये सब अपनी में गए, ये सबको समझ में आया ना? आमना, मरियम, सारा, सुफियान, Yes, sir. सुफियान, ताहा. ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे वो देख लेते पहले. व्हाट वी आर डूइंग, वी एडेड बोथ ऑफ दीस थिंग्स. तो व्हाट इज प्लस 2.93? इट इज द E naught ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड. E naught ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस इन दोनों का ऐड ही तो किया हमने, ऐसे तो किया ना, 2.93 प्लस माइनस ऑफ 2.37. 2.37 ऐसे ही तो किया हमने. दोनों दोनों जो वैल्यूज है उनको ऐड कर दिया, वैल्यूज विद द साइन प्लस व्हाट वी डिड E naught ऑफ, E naught किसका? E naught रिडक्शन ऑफ कैथोड. Now since we know that all the values that we will be given in the standard electrode potential, and क्योंकि standard electrode potential reduction potential होता है, what we will do, जो oxidation potential हम लोग नहीं है ना, E naught oxidation, इसको हम लोग E naught reduction में change करेंगे. So this will become as E naught reduction, or rather negative of E naught reduction of anode. E naught oxidation of anode क्या लिख सकते हैं? Negative, because we have seen in the previous lecture oxidation potential it is equal to minus of reduction potential. वही क्या आप समझे ना, नेगेटिव ऑफ E naught ऑफ एनोड प्लस E naught reduction of cathode. Now since we are using E naught reduction, we are using the reduction potential, that is also the standard electrode potential. So I can write this as E naught of cathode minus E naught of anode. This will give you the E naught cell, and this is how the formula comes into being. This is how we have got the formula. ठीक है, we have got the formula E cathode minus E anode. What is E naught of cathode and E naught? E naught are the electrode potential, standard electrode potential. What is E naught? Standard electrode potential. ठीक है, that is aka standard reduction potential. Same चीज होता है. And sometimes you will see this written as E naught cell. It is equal to
E naught of right cell minus E naught of the left cell. राइट माइनस लेफ्ट भी आपको दिख जाएगा. राइट मतलब क्या हो गया, कैथोड, एंड लेफ्ट मतलब एनोड. प्लीज कॉपी दिस डाउन. रेज योर हैंड वंस यू आर डन. ठीक है, तो आपके पास अभी सवाल देंगे हम. आई विल गिव यू द ई नॉट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स. ठीक है, तीन से दे देते, क्रोमियम और एफसी नहीं दिया. चल ठीक है, एक नया देते हैं आपको. ओके, so you will write the cell reaction, sorry, you will write the cell representation. After cell representation you will write the, after cell representation you are going to write the cell reaction. cell reaction को लिखने के बाद आप लिखिएगा उसका ई नॉट, सब कुछ लिखिएगा. ठीक है ना. चलिए इसको कॉपी कीजिए पहले. raise your hand once you're done. After that we are going to do a question. Just waiting for Mariam Batul. मरियम बतूल थोड़ा जल्दी लिखिए. मरियम लोहानी नहीं है. Those who are done, they can write the question. Given E naught of chromium 3 positive to chromium, that is equal to minus 0.74 volts, and E naught Fe2 positive to Fe, that is equal to minus 0.44 volts. Write the following. Number one, cell representation. Sorry, cell representation पहले से choose anode. सेकंड आपको चूज करना है कैथोड कौन सा होगा. Once we have chosen anode and cathode, तीसरा you will write the cell representation. Once you have represented the cell, fourth चीज आप कीजिएगा, you can calculate the E naught cell. Fifth जो आप कीजिएगा that is cell reaction. Sixth जो आप कीजिएगा that will be the number of electron used. Number of electron used. चलिए आराम से कीजिए इसको.
हो जाएगा ना? अरे कोई क्वेश्चन लेके घबरा तो नहीं गया ना? मरियम बतूल हो जाएगा? यस मरियम टेल मी। जी मरियम, I'm doing. कर लेंगे ना, मतलब इतना तो समझ में ना आ रहा है ना, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, उस पर ये होगा। हाँ थोड़ा थोड़ा. ठीक है, तो यू कैन सी द क्वेश्चन है ना, जो हमने पुराने सवाल किए हैं ना, उनको देख लीजिएगा, ठीक है ना? यू आर फ्री टू Okay, यूज द sir. नोटबुक। ठीक है, यू आर फ्री टू यूज द नोटबुक। दिस इज फॉर एवरीवन बाय द वे ना, यू आर फ्री टू यूज द नोटबुक। वंस यू आर डन, सेंड द आंसर्स ऑन माय व्हाट्सएप।
कोई इज एनीवन स्टक? लेट मी नो। कोई ना कोई तो अच्छा होगा जरूर अभी तक। इज एनीवन स्टक? हाँ जी। नो वन इज स्टक। सब कर रहे हैं। अरे वाह, दैट्स गुड। प्लीज लेट मी नो, है ना? इफ यू आर स्टक प्लीज लेट मी नो। चलिए देखते हैं एनोड सही। ताहा, आई एम लुकिंग एट योर आंसर। ओके ताहा, एनोड इज करेक्ट, कैथोड इज आल्सो करेक्ट। Yes, sir. हाँ ताहा, आई एम टॉकिंग अबाउट योर आंसर, आई एम सेइंग दैट। ठीक है, आई एम लुकिंग एट योर आंसर। ठीक है, एनोड एंड कैथोड इज करेक्ट। सेल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। ई नॉट सेल भी करेक्ट है। सेल रिएक्शन ठीक है ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुफियान, आई एम लुकिंग एट योर आंसर। ओ नो सुफियान, एनोड कैथोड ही गलत हो गया आपका तो। सुफियान, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. कौन होगा कैथोड? कौन होगा बताइए जरा, विच विल बी कैथोड? Uh, Iron. जिसका ई नॉट क्या हो? whose ई Iron नॉट? is anode. सॉरी, Iron is anode. कैन एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट सुफियान इज सेइंग? हाँ जी सुफियान, व्हाट आर यू सेइंग ना? Iron is anode. समझ में नहीं आया आपको? Uh, क्या बोल रहे हैं यार, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। जी सुफियान, I said iron is anode. कैन एनीवन अंडरस्टैंड व्हाट सुफियान इज ट्राइंग टू से? सारा, मरियम, ताहा, ताहा कुछ और समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें खराब हो सकता है। ताहा, Yes, sir. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट सुफियान इज सेइंग? No, sir. सुफियान, आपकी आवाज ना बिल्कुल ही साफ नहीं आती है, तो क्या ही बताएं। कैसे समझ, कोई नहीं समझ पा रहा क्या कहना चाह रहा है। सारा आपको समझ में आया था क्या? व्हाट सुफियान इज ट्राइंग टू से? व्हाट सारा? No, sir. अरे ये तुम दोबारा से डीपी लगा ली हो, है सारा? आप तो समझ गए थे पिछले क्लास तक। अच्छा डीपी आपका चेंज नहीं हुआ है, वो टाइटल चेंज हुआ फिर। I have not removed it till now. नॉट रिमूव इट। अच्छा सुफियान ने कहा नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सुफियान, आई एम आस्किंग इन जनरल कैसे पता लगता है? हाउ विल यू डिटरमाइन व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड? हाउ विल यू डिटरमाइन दैट? वो हम पूछना चाह रहे थे आपसे। यू हैव बीन गिवन द ई नॉट वैल्यूज, व्हाट, हाउ विल यू डिटरमाइन which is anode and which is cathode? Uh, uh, Oxidation takes place in anode. No, दोनों में रिडक्शन हो रहा है, क्या कीजिएगा आप? यू कैन सी दैट दोनों में तो रिडक्शन हो रहा है ना, Mm. तो फिर ऑक्सीडेशन टेक Oh, प्लेस yeah, तो yeah. बात में। हाँ फिर बताइए कैसे करेंगे? व्हाट विल बी एनोड? Uh, I don't know. व्हाट? I don't know. आई डोंट नो। तो पिछले वाले में हम लोगों ने कैसे किया था? वी डिड अ लास्ट क्वेश्चन ना, यहाँ पे देखिए आपने लिखा है ये, सिंस mg to mg2 plus have you written this point? आपने ये लिखा सुफियान? Yes. तो फिर उसको उसको पढ़िए जरा और समझिए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। तो हो जाएगा, हो जाएगा, हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इट इज बेटर इफ यू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन, है ना? Yes. बाकी लोग आंसर भेजे भाई, सारा, मरियम बतूल, आमना, जल्दी आंसर भेजें। यस टेल मी गाइस। So 1 minute, I'm just doing the last one. ओके, हाँ सुफियान, समझ में आया आपको? Yes, sir. कीजिए अब जरा, करके भेजिए। अरे भाई कितना, प्लीज सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन, आमना, सारा, मरियम बतूल, प्लीज सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन। ठीक है, सही है, वेरी गुड। सारा योर आंसर इज करेक्ट। सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन ना, आमना, आमना भाग गई। मरियम बतूल, सेंड मी वॉट एवर यू हैव डन, जल्दी भेजिएगा प्लीज। So in exam, the questions will come like this, like direct. नहीं, डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं रहेगा, ये तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको बेसिकली। मतलब हो सकता है इस तरह के भी सवाल हो, आई मीन इसमें से कोई भी एक सवाल आ सकता है ना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा है ना, इसमें आपके पास ऑप्शन आ सकता है। मरियम कैन यू सेंड इन द व्हाट्सएप, ये बताइए आप, मरियम, मरियम बतूल कैन यू सेंड ऑन व्हाट्सएप, मरियम बतूल कैन यू सेंड ऑन व्हाट्सएप। अरे Sir, I भाई don't have मरियम, phone with me. नहीं तो वैसे कोई बात नहीं, तो आप बस देख लीजिए, है ना, चैट में कितना लिखेंगे आप, है ना, ठीक है, बस देख लीजिए सर। Yes, sir. ठीक है, सुफियान एनोड बताइए कौन सा होगा, एनोड, सुफियान बताइए एनोड कौन सा होगा, सुफियान। The less value of potential. What less So value, has higher value of SRP ना, हायर वैल्यू किसका है इसमें से, oh, किसका and हायर है, and तो then वेट, क्रोमियम इज हायर और आयरन इज हायर, iron is iron. आयरन इज हायर, ठीक है, दैट विल बी कैथोड, है ना, Okay. मेक सेंस, दैट विल बी कैथोड, कैथोड कौन सा हो जाएगा, आयरन, इसमें Fe2 पॉजिटिव से Fe होगा, the other one will be एनोड, एनोड में उल्टा रिएक्शन होगा, एनोड में रिएक्ट क्या होगा, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड, दैट इज क्रोमियम 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव bridge, and in the cathode we will be having Fe2 positive to Fe, E not cell,
क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव में वी विल बी हैविंग 0.74 वोल्ट, है ना, बिकॉज यहाँ पे वी हैव बीन गिवन रिडक्शन, लेकिन हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, वी हैव बीन गिवन रिडक्शन, हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी प्लस 0.74 प्लस Fe2 plus Fe is minus 0.44 minus 0.44, and this will come out to be how much? 0.74 minus 0.44 will be equal to 0.30 volt. 0.30 volt. Now we are going to write the cell reaction. Cell reaction. Cell reaction देखिए, एनोड में क्या चल रहा है, एनोड में वी आर हैविंग क्रोमियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद कैथोड में आपके पास क्या है, कैथोड में हो रहा है Fe 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Fe, ठीक है। तो इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, और इधर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2। तो यहाँ पे देखिए जरा, तो यू विल हैव 2 chromium, 2 chromium 3 positive, 6 electron, CFE, 6 electron, CFE, 6 electron, 6 electron will cancel each other out. Cell reaction will be 2Cr plus CFE2 positive, giving you 2Cr 3 positive plus 3Fe, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इट इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। Copy this down. If you are done, raise your hand. Raise your hand, Mariam. Mariam Matul तो नहीं है, ठीक है, Mariam Matul seems to be not here. अब ध्यान जरा सुनिए, ठीक है, सबको ध्यान से सुनिएगा जरा, है ना। So in this particular cell, whatever we did, we had Cr3 positive, I mean chromium to chromium 3 positive, and in this side we have put Fe2 positive to Fe. Okay. So we have these one cell reaction, this cell reaction is happening. अच्छा एक चीज बताइए हमें, chromium is not a cell on its own, na? It is not a complete cell. Make sense? Taha Sara, what I'm trying to say? Yes, When sir. I will join chromium and iron, then only the cell will be complete, and then only if I have put a galvanometer, I will, or sorry, voltmeter, I will get a voltage. Correct है? Yes, sir. Make sense? Yes or no? है ना?
I will put up a voltmeter. यहाँ वो क्या बताएगा, यहाँ पे वोल्टेज बताएगा. That makes sense everyone. आमना, तारा, सुफियान and ताहा. सबको समझ में आ रहा है what I'm trying to say? है Yes, ना? sir. Chromium is not going to give you any voltage. अगर सिर्फ chromium रहता है यहाँ पे, Fe2 positive नहीं रहता, then I will not be getting any voltage because the cell is itself not complete. Similarly, if I would have only chromium, then also the cell is not complete and I will not be getting any voltage. When I have joined both of these, I will be getting a voltage of how much? 0.3 if I have taken the standard conditions. 0.3 volts. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Correct hai? Yes, sir. Yes, sir. Now, how will I know this 0.3 voltage, whatever I am having, what is the contribution of chromium and what is the contribution of Fe? How will I? For example, if I will tell you, in a class, there are 20 students. How many students in a class? 20. How many students are 20? So how many will be boys and how many will be girls? If there are 20 students, then how many will be boys and how many will be girls? Tell me. 10, 10. Is it necessary? बताइए. Is it necessary? There will be 10, 10. No. No, no. We cannot say. Right? We cannot say. So in a classroom, there is a little contribution of the girls and there is a little contribution of the boys. In total, we are getting, for example, ये बहुत ही basic है. जैसे for example, mass number आपको अगर बताए, for example, mass number is atomic होता है ना, mass number it is equal to, let's suppose 40. Now we know that mass number it is equal to the number of proton plus number of neutron. अब ये जो 40 है, it can be from 20 plus 20 that happens in calcium, or it can be from 18 plus 22 that happens in argon. That happens in argon. ठीक है. जैसे मास नंबर से when you get the mass number you cannot determine the proton and neutron. Only from the mass number you cannot determine. You should have at least some other information about the atomic number or proton number, then only you can see how much protons and how much neutrons exactly are present. और उसी तरह बेसिक सिंपल एग्जाम्पल हमने दिया है. अगर आपके पास 10-20 स्टूडेंट है, you cannot really say how many of them are girls and how many of them are boys. उसी तरह से we cannot say what is the contribution of chromium and what is the contribution of Fe. बात समझ आ रही है? हाँ ना? Does that Yes, make sir. sense? Yes or no? Please tell me. ठीक है. So now how can we determine? देखिए मतलब हम लोग तो उल्टा जाते हैं ना. We have been given the E naught of chromium and E naught of Fe. ये पता ही नहीं चलता. E naught of chromium कैसे पता चलेगा? chromium अकेले थोड़ा सेल बना लेगा कोई. Fe अकेले कोई सेल नहीं बना पाएगा. So what we were all getting is some voltage when we attach chromium and iron cell. तो हमको कुछ वोल्टेज मिला. फिर हमने कोई मेटल ए और मेटल बी को अटैच किया तो हमको फिर से कोई दूसरा वोल्टेज मिला. ठीक है. सो बट वी डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए और व्हाट एग्जैक्टली इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी. उसके बाद सोचा गया एक काम करते हैं. एक काम ये करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रखते हैं. स्टैंडर्ड. ठीक है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रखते हैं. इसको वी विल सपोज दैट दिस सेल इट हैज 0 वोल्टेज. इसको मान लेते हैं हम लोग 0 वोल्टेज. ठीक है. इसको मान लिया हमने क्या? 0 वोल्टेज. अब इसके साथ मान लीजिए इफ आई हैव अटैच्ड एनीथिंग, अभी यहाँ एनोड का काम कर रहा है ना, और यहाँ पे हमने कोई एक मेटल अटैच किया, मेटल ए. तो वी हैव अ स्टैंडर्ड. वो हमने मान लिया, कोई भी स्टैंडर्ड ले सकते हो, वो हमने मान लिया स्टैंडर्ड. और उसकी वोल्टेज कितना होगा? द वोल्टेज दैट इट विल बी प्रोवाइडिंग विल बी 0. तो हमने बोल दिया 0 ये प्रोवाइड करेगा. नाउ इफ दिस पर्टिकुलर कपल स्टैंडर्ड एंड मेटल है ना, एक स्टैंडर्ड आपके पास इलेक्ट्रोड है और एक मेटल ए है. इफ दिस कपल इज गिविंग अस लेट अस सपोज 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट. ये तो 0 दे रहा है, तो मेटल कितना दे रहा होगा? 1.1 वोल्ट. डज दैट मेक सेंस? क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बताएं. Sir, can you repeat? ठीक है, तो रिपीट करते हैं. Since we cannot determine the electrode potential of individual half cell, है ना, what we did, we chose a standard. और उस स्टैंडर्ड को हमने बोल दिया that will be 0. It may have some contribution, but we let it as 0. उसको हमने 0 मान ली. Now whatever the contribution will be from the other side, उसी को पूरा का पूरा क्या बोलेंगे? That will be the complete contribution. वही का उसी का वैल्यू आएगा. मेटल ए का जो भी contribution, बिकॉज इसका तो 0 है ना, इसका तो 0 है. whatever value I will be getting on the voltmeter
will be only from the metal A, because we have assumed this to be zero. Does that make sense? Yes or no? Yes, Please sir. tell me. ठीक है? So now we have to talk about इसी को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो रेफरेंस मान लिया गया कि वो क्या है, जीरो है. फॉर एग्जाम्पल इन द इनिशियल डेज, मतलब हमने शायद बताया था आप लोग को कि जैसे कार्बन 12 को रेफरेंस मान लिया गया किसके लिए, एएमयू के लिए, है ना. तो वी हैव टू यूज सम रेफरेंस व्हेनेवर देयर इज रिलेटिविटी, जहां पे भी रिलेटिविटी है वहां पे क्या मानना पड़ता है, रेफरेंस. तो राइट हियर विथ मी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड में लिखिएगा, राइट दिस पॉइंट विथ मी, द पोटेंशियल ऑफ single electrode cannot be determined, cannot be determined, the potential of single electrode cannot be determined, but potential difference, पूरा ही लिख देते हैं ना, but potential difference, but potential difference between two electrodes, between two electrodes can be accurately measured, can be accurately measured using reference electrode, using reference electrode. Next point, an electrode is chosen as a reference, as a reference with respect to, with respect to which all other electrodes, all other electrodes are valued लिख दीजिए, है ना, उसकी वैल्यू है. And SRP of reference electrode is fixed. ठीक है. ऐसे देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड का कहीं कहीं पे आपको मतलब जीरो, जनरली जीरो रहता है, यूजुअली टेक इट एज जीरो. मीन जीरो तो एक ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. वी हैव अनदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड दैट इज नोन एज कैलेमल इलेक्ट्रोड. कैलेमल इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ सिल्वर. नाउ कैलेमल इलेक्ट्रोड इट हैज सर्टेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना. तो कैलेमल इलेक्ट्रोड को यूज किया गया बिकॉज रेफरेंस जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव. तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से एक का मेजर किया गया, दैट इज कैलेमल इलेक्ट्रोड, फिर कैलेमल इलेक्ट्रोड को यूज किया गया. तो उतना पढ़ना नहीं है आपको. हम यहाँ पे फिक्स लिख के यूजुअली जीरो कर दे रहे हैं ना, यूजुअली जीरो, जीरो वाले का ही आपको पढ़ना है, ठीक है ना. कैरेमल इलेक्ट्रोड आपको नहीं पढ़ना है, जीरो, ठीक है, यूजुअली जीरो. रेज योर हैंड once you're done. After this, we are going to learn about the standard hydrogen electrode. Raise your hand once you're done.
Oh my god. Just give me a second, guys. हाँ ठीक. Please write standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode. ठीक है. फोटो लिख लीजिए जरा. So this is the standard hydrogen electrode का schematic diagram. So basically we have a wire. ठीक है. Wire से बस क्या क्या what we have done, we have a platinum electrode. ना platinum electrode. Platinum is only going to give a surface for the reaction to occur. यहाँ पे आप हाइड्रोजन डाल रहे हैं. यहाँ पे आपके पास एक H plus acidic solution है whose molarity is 1 molar. Whose molarity is 1 molar. Basically, when standard hydrogen electrode is acting as anode, first CSH3 is acting as anode. तो हम क्या कह सकते हैं? Then the reaction that occurs is going to be H2, is going to give you 2H plus 2 electrons. ठीक है? And we can represent this as E naught of H2 plus H plus. This will be equal to 0 volts. This will be equal to 0 volts. Cell representation जो होगा इसका ऐसे होगा platinum slash H2 slash H plus. This will be the representation. है. Second जो है when standard hydrogen electrode is acting as cathode. अगर ये cathode की तरह काम कर रहा है then we will write like this. H2H positive is going to give you H2. My bad 2H plus 2 electron is going to give you H plus. Sorry, not H plus. Is going to give you 2H2H2. H2. E naught can be written as E naught of H plus 2H2. This will be again equal to 0 volts, and this can be represented as what? H plus 2H2 and in the presence of platinum, something like this. ठीक है. इसके बाद का नोट लिखे. ठीक है. ओहो फिर क्या. जस्ट गिव मी सेकंड गाइस. Just give me a second. Write a note. First point in the note you will write platinum is only used as a surface for the reaction. ठीक है. For the reaction. ये पॉइंट मैंने शायद पहले भी लिखा हो. नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ना सीधा सीधा आंसर हो सकता है. फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क यू हाउ विल यू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, हाउ विल यू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, है ना. किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आप निकालेंगे? यू विल राइट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, it is coupled with standard hydrogen electrode. ठीक है. मान लीजिए आपसे सवाल है
how will you determine the electrode potential of Mg? So you will write to determine the electrode potential of Mg, है ना? Any electrode की जगह whatever metal they are asking in that question, आप उसको लिखिएगा, ठीक है ना? Coupled with SHE, standard hydrogen electrode, and potential measured and potential measured and potential measured by the voltmeter is taken as the standard potential of that electrode. ठीक है, copy this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Amna. ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग है बस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो लिखिएगा. देन आई विल एंड द क्लास. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई हैव टू टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ. ठीक है. अच्छा, चलिए हम कुछ चीजें लिखा देते हैं, एप्लीकेशन वगैरह हम बाद में लेंगे. राइट हियर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जो आप लोगों ने 10th क्लास में जो बचपन में पढ़ा है ना, रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने पढ़ी थी, उसी का ये और एक्सपैंडेड फॉर्म है ना. तो प्लीज राइट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट, the value of different electrode potential are arranged in a series of increasing or decreasing order, increasing or decreasing order, then the series is called electrochemical series. Series is called electrochemical series. Now what we are going to write is the electrochemical series in increasing order of standard reduction potential. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको लिखने वाले हैं. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा. इट इज समथिंग लाइक दिस. Lithium, then we'll have potassium, lithium, barat, kana, मजे से आया.
से आया. Then you'll have मंजन कर फेंक दे. मंजन कर फेंक दे. Then you have कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. Then you have hydrogen which is equal to 0. After that you have छापा. Copper, Hg, Ag, Pp and Ag. ठीक है. देखिए याद करने का तरीका क्या है, ऐसे है. लेके बारात, लेके बारात काना मजे से आया. मजे से आया. ओ माय गॉड, हिंदी चले गए. मजे से आया. काना मजे से आया. दिस इज मंजन कर फेंक दे. कंप्लीट. मंजन कर फेंक दे. वी हैव कोई निगाहें, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. And we have hydrogen is equal to 0 and this whole thing can be written as छापा. CHAPA. छापा. ठीक है. अब देखिए जरा, आई एम गोइंग टू, इसको लिख लीजिए पहले. इसको लिख लो. लिख लिख. और यहाँ पर ना पूरी स्टोरी जो है ना उसको हम एक साथ भी लिख देते हैं. ये आपको याद रखना है, ये आपको याद करना ही है ना. काफी चीजें आसान हो जाएंगी इससे. लेके बारात काना मजे से आया, है ना. काना मजे से आया. फिर कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. तो बड़ा ही कर देते हैं फिर सही रहेगा. मजे से आया. लेके बारात काना मजे से आया. कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. नहीं नहीं, मंजन कर फेंक दे भूल गया ना. मंजन कर फेंक दे. मंजन कर फेंक दे. कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी. हाइड्रोजन 0. छापा. ये कहानी याद कर लेंगे आप लोग, बताइए. कहानी का थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं आपको ना. डू यू नो व्हाट इज काना? काना, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज काना? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज काना? काना काना कौन जानता है? काना 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 कोई नहीं जानता है. The हाउ मेनी ऑफ hand यू of नो व्हाट इज? God. नो. काना मीन्स हु इज स्क्विंट, लाइक उसका एक आंख होता है ना, उसको काना बोलते हैं. इफ एनीवन हैज वन आई, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल पायरेट. काना दज्जाल सुनते होंगे आप लोग. काना दज्जाल सुना है आप लोगों ने? काना दज्जाल, Yeah, yeah. है ना. व्हाई इट इज काना दज्जाल? व्हाई इट इज काना दज्जाल? बिकॉज ही विल बी हैविंग वन आई, मतलब One-eyed. वन आई. तो वन आइड इज नोन एज काना. ठीक है ना. तो क्या हो रहा है? ही इज हैविंग हिज वेडिंग. तो ले आप काना मजे से आया. ठीक है ना. समबडी इज हैविंग वन आई, उसकी शादी है तो मजा तो उसको आएगा ही, राइट. तो लेके बारात काना मजे से आया. नाउ वंस यू आर एट, मतलब शादी वादी हो गई. फिर उसके बाद जनरली क्या होता है ना, जब गांव में शादी होती है, देन यू हैव टू स्टे एट द ब्राइड्स प्लेस. ओके, यू हैव टू स्टे एट द ब्राइड्स प्लेस. फिर नाश्ता करा के आप लोग को भेजते हैं. दूल्हे को क्या करते हैं, नाश्ता एक रात रुकवाते हैं और फिर नाश्ता कराते हैं. उसके बाद फिर रुखसती होती है, राइट. तो जब नाश्ता होगा तो गांव, तो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज मंजन? मंजन जानते हैं? मंजन. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज मंजन? मंजन नहीं पता आपको? कोई आइडिया नहीं है मंजन का? अरे मंजन नहीं होता, पाउडर वाला जो होता है. यू कैन ऑल्सो डू ब्रश विथ इट. अगर आप कभी इंडिया आए होंगे तो आपने यूज किया होगा शायद मंजन. इफ यू डोंट नो व्हाट इज मंजन ना, अपने पेरेंट्स से पूछिए. ठीक है, आमना सारा सुफियान ताहा, ताज से पूछिएगा व्हाट इज मंजन.
तन्वी पूछ लेंगे पेरेंट्स से। Yes, बताइए what's the spelling? व्हाट सारा What's the spelling? स्पेलिंग मंजन होता है फिर माँ ना जाना मंजन दंत मंजन कुछ सुना है ऐसे आप लोगों ने कुछ सुना ही नहीं होगा ना आपने ऊपर रहते हैं आप लोग मंजन क्या बोल देंगे सारा मंजन Manjan. मंजन है ना इफ दे विल नॉट अंडरस्टैंड तो आप कुछ बोलिए वो ब्रश टाइप का कुछ होता है क्या ब्रश करने वाला ठीक है तो उनको समझ में आ जाएगा अगर आप पेरेंट्स भी पता नहीं भूल गए हो सकता है ठीक है तो सुबह सुबह गांव का गीत है तो मंजन कर है ना एंड इफ यू डू मंजन फिर आप मंजन कर फेंक देते हैं ना इवन इफ यू डू ब्रश यू थ्रो इट आउट राइट यू स्पिट इट आउट तो मंजन कर फेंक दे ठीक है कहाँ थे हम लोग शादी ही सुबह में रुखसती से पहले नाश्ता किया नाश्ता करने से पहले क्या करेंगे ब्रश करेंगे नाश्ता करने से पहले ब्रश करेंगे तो ये मंजन कर रहे हैं ठीक है मंजन करने को ही क्या कहते हैं ब्रश करना इज मंजन करना आफ्टर दैट फिर रुखसती हुई है ना रुखसती जब हुई अब वो बेचारा उसका तो एक ही आंख है एंड ही सॉ हिज ब्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम जिसके एक ही आंख है तो उसकी नजरें कहाँ जाएंगी नजरें तो आंख पे ही जाएंगे ना उसकी आंख ठीक हो कम से कम ठीक है तो उसने उसकी आंखें को देखी आंखों को देखा उसने क्या ओ कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी है ना कोई निगाहें सुंदरी निगाहें आई होप यू गाइस नो व्हाट इज निगाहें एंड एवरीथिंग राइट निगाहें आईज कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी ठीक है दैट इज रुखसती फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बारात एलिमेंट उसके बाद वी हैव द ब्रश एलिमेंट उसके बाद वी हैव द रुखसती एलिमेंट की रुखसती जानते हैं ना सब कोई आमना सारा सुफियान ताहा विदाई रुखसती ऑल ऑफ यू नो ना Yes, sir. जी है ना पता है ना भाई सबको ठीक है तो रुखसती पहले वाले एलिमेंट्स कौन से हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर बारात एलिमेंट्स है ना लेके बारात खाना मजे से आया उसके बाद मंजन करना चाहिए थे दीज आर ब्रश एलिमेंट ब्रेकफास्ट एलिमेंट कुछ भी बोलेंगे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी टिल हियर वी आर हैविंग द रुखसती एलिमेंट एंड इफ आई कंप्लीटली से लेके बारात खाना मजे से आया मंजन कर फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी द वेडिंग एलिमेंट ये सारे सारे कौन से हैं वेडिंग एलिमेंट आफ्टर दैट आई हैव हाइड्रोजन जीरो और उसके बाद आपके पास क्या है आपके पास है छापा देन आफ्टर दैट यू आर हैविंग छापा अब इसको देखिए नंबर लाइन में भी अगर बना दे तभी आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा ठीक है कुछ इस तरह से है ये लाइक दिस लिथियम है ठीक है उसके बाद पोटेशियम है देन यू हैव बेरियम कैल्शियम सोडियम Mg strontium aluminium then you have manganese zinc chromium iron cadmium then you have cobalt nickel then you have tin lead ठीक है अब यहाँ पे आपके पास क्या है हाइड्रोजन विच इज जीरो तो ये सारे के सारे नेगेटिव है सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है लिथियम एसआरपी हो रही है ना उसके बाद देन यू हैव कॉपर मरकरी सिल्वर प्लैटिनम एंड देन गोल्ड ठीक है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है गोल्ड इज मोस्ट पॉजिटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है लिथियम ठीक है तो गोल्ड पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा गोल्ड इज हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा जल्दी वो क्या होगा रिड्यूस होगा ऑक्सीडाइज और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है ऑक्सीडाइज होना ना मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना इलेक्ट्रॉन कोई भी लूज करेगा तो क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा तो गोल्ड इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ मेटल इजीली ठीक है तो मेटल की तरह रिएक्ट नहीं करेगा तो रिएक्शन देगा दैट इज वाई आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर महंगा एलिमेंट है ना इफ यू कंपेयर विद द अदर एलिमेंट्स कॉपर इज वेरी एक्सपेंसिव है ना मरकरी इज एक्सपेंसिव सिल्वर इज एक्सपेंसिव प्लैटिनम इज एक्सपेंसिव गोल्ड इज आल्सो एक्सपेंसिव व्हाई दीज एलिमेंट्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव और जो चीज लेस रिएक्टिव होगी वो चीज अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है ना देन इट विल स्टे एज इट इज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and if something is staying as it is for a very long time that means it has some value in it है ना तभी तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी बरकरार रहेगी अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम है एंड इफ समथिंग इज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देन उसकी वैल्यू क्या होगी ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज्यादा होगी दैट इज व्हाई these elements for example silver gold copper all of these were used as what all of these were used as coins and still we are having की वैल्यू है ना सब चीज की वैल्यू why they are having value because they are highly they are very less reactive not highly reactive they are very less reactive है ना ये सारी चीज आपने शायद 10th में ही पढ़ा होगा गोल्ड के बारे में गोल्ड जल्दी से टार्निश नहीं होता इट इज नॉट वो ऑक्सीडाइज जल्दी होगा ही नहीं ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रिएक्शन मतलब रिएक्शन शो ही नहीं